Good afternoon, students. Myself Deepali Harchande. Today we are going to learn third lesson, fifth part. It is the last part of this lesson. The lesson name is Key Concepts and Issues since 1991, Humanitarian Issues. In the previous parts, we have learned about the status of women in Indian society. So in this lesson, we are going to see the next part. Status of women in India. Status of women shift from development to empowerment. In the previous part, we have seen the initial approach to women's in India. Then welfare approach. In that, we have learned about various community development, that is Mahila Mandal, then child care benefits, health programs for the women's. So these were the few development plans by the government of India. After that, we have seen the approaches. The approaches has got shifted from welfare to development. Now, in this lecture, we are going to see the status of women shift from development to empowerment. Means here, the government wanted to ensure that the benefits of development do not bypass women, and therefore their participation in planning and implementation was necessary. So here, as we have seen, the empowerment of women as per the era, as per the time passes, the status of woman, that term has got changed. Even the empowerment of woman, that term also has got changed into a positive manner. So here, the government of India, they wanted a participation of women in the government of India or in the offices of government. So that in that case, the government of India has provided reservation of seats in the local bodies of panchayats and municipalities for women. And what was the foundation of that? Laying a strong foundation for their participation in decision making at the local level. Means in the 1993 73rd and 74th amendment of the constitution, the women can participate in the election directly. They can contest an election. We'll see in हिंदी. हमने इसके पहले देखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, एज वेल एज वी हैव सीन, मीन्स हमने देखा है कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है महिलाओं के बारे में. तो उसमें जो सारे इश्यूज़ थे वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने स्टार्ट किया है, वो उनकी समस्या जो है वो सॉल्व करने के लिए. सो नाउ अब हम ये देखने वाले हैं कि एम्पावरमेंट, सबलीकरण, महिलाओं का सबलीकरण और सशक्तिकरण के लिए अभी हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी प्रयत्नशील बन रहे हैं और उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं. तो उस स्टेप्स में फर्स्ट जो स्टेप है, तो वो स्टेप क्या है? जैसे संविधान में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पास हुआ 1993 में, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया महिलाओं के लिए. जो लोकल बॉडीज़ है, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ के जो ऑफिसेस है, उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया और डायरेक्टली अभी महिला जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इलेक्शन लड़ सकते हैं. तो ये नया अमेंडमेंट पास हुआ 1993 में, और ये जो है वो दिस इज़ एन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एज वेल एज ग्रेट चेंज इन द स्टेटस ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन. ये एक बदलाव है जो महिलाओं के
जीवन में आया था और उनका जीवन परिवर्तन करने में ये बहुत अच्छा नया जो तरीका अपनाया गया है भारत सरकार ने, वो सराहनीय है। नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉइंट। See here, the women empowerment through education. Now these are few steps has been taken by the government of India. Very first is to provide education facilities to women. And here the till 14 years of age of girl child, the education is totally free. This picture gives us information about education in rural area and how we can empower the women through education in rural area. This picture of urban areas. In urban areas also, the women, the girl child, they are getting education, even higher education also. Again the rural area, after the education, the women, they get an opportunity in various fields like nurses, like doctors, like teacher and in other fields. ये जो हमने देखा है शिक्षण प्रोवाइड किया गया है, महिलाओं को शिक्षित कराया जा रहा है, ये है ग्रामीण भाग में जो एजुकेशन दिया जाता है उसकी एक तस्वीर है। बाद में शहरों में भी लड़कियों को एजुकेशन शिक्षण दिया गया है और उसमें 14 ईयर तक, और वी कैन से टिल द 10th स्टैंडर्ड तक, 10वीं कक्षा तक बच्चियों को, महिलाओं को शिक्षण जो है, जो एजुकेशन है वो फ्री दिया जा रहा है। और एजुकेशन लेने के बाद महिलाओं को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और वो अपॉर्चुनिटीज़ का, वो संधि का इस्तेमाल करके वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे एक नर्स देख रहे हैं, वो उसने आफ्टर एजुकेशन वो शिक्षा लेने के बाद उसने ये नया खुद का जॉब उसने एक्वायर कर लिया है। नाउ लेट्स सी, वेरियस कमीशंस has started or set up through Indian government. So what are all that commissions? The National Commission for Women, that is one of the commission has been started, has been set up by the Indian government. The National Commission for Women was set up by an act of Parliament in 1990 to safeguard the rights and legal entitlements of women. The 73rd and 74th Amendment 1993 to the Constitution of India have provided for reservation of seats in the local bodies of panchayats and municipalities for women, laying a strong foundation for their participation in decision making at local level. Local level means the local government like Panchayati Raj, municipality, Jilla Parishad, district level government. So in that offices or in that governmental institutions, the women, they can actual participate, they can directly participate and they contest the election. महिला जो है वो डायरेक्टली खुद का जो इलेक्शन है वो लड़ सकते हैं और इस तरह से उन्होंने सहभाग लिया गवर्नमेंट में। अब क्या हुआ, जब महिलाओं के पास सत्ता आई, जब महिलाओं के पास पावर आई, तो उन्होंने उस पावर का इस्तेमाल करके आगे जाके बाकी के जो महिलाएं हैं उनकी समस्याओं के तरफ ध्यान दिया, उनके एजुकेशन के तरफ ध्यान दिया। हमने जो देखा है लास्ट लेक्चर में, सो उसमें है बच्चियों को, लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलता था रूरल एरिया में एज वेल एज इन आदिवासी एरिया में। तो अब उन्होंने जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके इलेक्ट हुए गए हैं मेंबर्स हैं, जो महिला मेंबर है,
महिला सदस्य है, उन्होंने इस अलग अलग इश्यूज़ पे अभी ध्यान देना चालू किया. अगेन वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट द पॉवर्टी एंड वुमेन, गरीबी और महिलाएं, ये भी हमने पढ़ा है. तो उसमें भी ये जो इलेक्टेड महिला है, जो सदस्य है, उन्होंने काम करना शुरू किया और उनकी वजह से जो एक बदलाव आना शुरू हो गया समाज में, हमारे भारत में, तो वो बदलाव भी बहुत सराहनीय है. अभी ये कोविड-19 में मोदी जी ने भाषण देके हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कहा है और उसमें हम सहभाग कर रहे हैं. महिलाओं का भी सहभाग बराबरी से है आत्मनिर्भर भारत बनाने में. तो आत्मनिर्भर भारत बनाना है मतलब महिलाओं का सबलीकरण करना है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना है. उनमें अगर सशक्तिकरण हो गया तो वो हमारा जो देश है उसको एक डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते, प्रगति के तरफ हम उसको भी ले जा सकते हैं. The socio-cultural landscape for women is a complex mixture of the old and the new. Industrialization, globalization, and urbanization, modernization have led to major changes in the lifestyle of women. So, you can see in the picture how the globalization and urbanization led the woman's life towards a particular and successful lifestyle. हम देख सकते हैं पिक्चर में ये जो 3 महिला है, तो उनमें भी बहुत सारे ये चेंजेस कब आना शुरू हो गया, जब महिलाओं को एजुकेशन मिलना चालू हो गया, उनके जीवन में सुधार आना चालू हो गया, उनके मानसिक और राजकीय राजकीय परिवर्तन जो है, मन का परिवर्तन, वो भी हम इसमें देख सकते हैं. और इसी की वजह से आज हम ये 3 महिला देख सकते हैं, ये एक टॉप लेवल पे, उच्च स्थान पे पहुंची है. तो ये है हमारे समाज में बदलाव. यहाँ पे वुमेन्स बिल का एक पिक्चर मैंने दिया है. वुमेन्स बिल मीन्स as we have seen that we have got 33% of reservation in the panchayati and municipality government. So here women's, they have presented, they have amended the bill for the women's. Then here is a picture, women reservation in local government. The proportion tells us that now at least we have got 33% of reservation in government or in the ruling government, we can say. Till yet we have not got 50% of reservation. I hope in future we'll get at least 50% of reservation for women in the government of India. Liberalization has provided better opportunities for women in terms of education, jobs, and decision making power. Now see the status of women in India. Just we have seen that what had happened due to industrialization, globalization, and others. Now we'll move towards the next point. Liberalization has provided opportunities for women in terms of education, jobs, and decision making power. See here, in terms of education, what are the changes in the life of a woman? Here I have put one picture of education in Adivasi area as well as in a rural area. This picture is about urban areas, women's education in India. See, liberalization
Already in the previous lecture I have taught about liberalization. Liberalization means freedom, individual freedom. मराठी त्याला उदात्तीकरण म्हणतात. So because of individual freedom, the women also get the various opportunities which has been given to the men. So here they are also getting opportunity of education, jobs and decision making. This is the condition of our women, of our girls in our country. You can see here job opportunities for women. There are n number of job opportunities. See here a group of women, they are working in particular company. They have a dress code and they are looking very happy because they are earning for their survival. See why we need to give education, then jobs and decision making power, because they can serve themselves, they can survive or they can earn for themselves, earn for the livelihood. खुद के लिए वो खुद का अर्निंग कर सकते हैं. इसके लिए हमें उनको एजुकेशन देना है, हमें उनको पावर भी देनी है. पावर कौन सी देनी है? तो उन्होंने खुद के डिसीजन खुद लेने चाहिए. जैसे हम देखते हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, उसमें महिलाओं को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया जाता है. तो इसकी वजह से जो डिसीजंस लेने हैं महिलाओं के, वो कभी खुद के खुद डिसीजन वो नहीं ले पाती है. तो हमेशा वो किस पे डिपेंड रहती है? दे आर डिपेंडिंग ऑन देयर हस्बैंड. सो महिला क्या करती है, वो उसका जो पति है और जो घर में जो बड़े लोग हैं वो जो डिसीजन देते हैं उसी डिसीजन को वो मानते हैं. तो अभी उनके पास ये डिसीजन पावर भी आ गया. तो ये देखिए अभी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल गए हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ कंपनीज़ में है, इंडस्ट्रीज़ में है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में है, वेरियस लेवल पे उनको जॉब मिलते हैं. तो नाउ दिस पिक्चर टेल्स अस, ये पिक्चर हमें बताता है कि हाउ दे आर हैप्पी. वो खुद का खुद कमाते भी है और वो एक आत्मनिर्भर बन भी गए हैं. See job opportunities in urban area. Yeah, you will get changes due to the urban and rural condition and situation of the areas, and area wise, location wise, region wise it differs. Next is the development of women and child development, Government of India 2006. This is a very important point in this lesson. You need to learn, you need to listen very carefully. The Department of Women and Child Development, Government of India came into exist as a separate ministry in 2006. Earlier, since 1985, it was department under the Ministry of Human Resources Development. पहले ये जो डिपार्टमेंट था वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के इसमें था, निजी इसमें था. बाद में ये अब सेपरेट मिनिस्ट्री में आ गया है और इसका जो फंक्शन है वो भी चेंज हो गया है. ओनली द फंक्शन हैज़ गॉट चेंज बट द एम एंड ऑब्जेक्टिव इज़ सेम. इसको हम हिंदी में उसको अलग अलग नाम भी है, जैसे पोषण अभियान, हिंदी और मराठी में दोनों में भी नाम है. देन इन मराठी इट इज़ नोन एज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. देन मातृशक्ति, राष्ट्र शक्ति, हिंदी में है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. ये स्लोगन्स दिए हैं इसी योजना के लिए जो हम अभी पढ़ने वाले हैं. 2006 में जो ये मिनिस्ट्री के तरफ से ये हमें योजना मिलने चालू हो गया है, तो उसी का एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं. और फॉर द वुमेन एंड फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट दे हैव गिवन वन मोर, it is not provision but it is a facility has been given by government, that is सही पोषण देश रोशन.
So these are few names of yojanas or of programs run by the government of India. Now let's see the introduction and what was the vision and mission of this development program. The development of women and child development, Government of India came into existence as a separate ministry with effect from 30th January 2006. The ministry was constituted with the prime intention of addressing gaps in state action for women and children, for promoting interministerial and intersectoral convergence to create gender equitable and child centered legislation, policies, and programs. Now we'll see what was the mission and the vision of this program. The vision is empowered empowered women living with dignity and contributing as equal partners in development in a government free from violence and discrimination, and well nurtured children with full opportunities for growth and development in a safe and protective environment. So for this vision, they have implemented few programs. As I told you that one program was Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, then Matru Shakti Rashtra Bhakti, and Sahi Poshan Desh Roshan. ये जो programs है, these are the programs to implement the vision of this program. Let's see the mission. Mission means the aim or objective or goal which the India government want to achieve. Fine. So under the mission we can say promoting social and economic empowerment of women through cross-cutting policies and programs, mainstreaming gender concerns, creating awareness about their rights, and facilitating institutional and legislative support for enabling them realize their human rights and develop to their full potential. Second mission was ensuring development, care and protection of children through cross-cutting policies and programs, spreading awareness about their rights and facilitate access to learning, nutrition, institutional and legislative support for enabling them to grow and develop to their full potential. So here that was the mission, or that is the mission of this program. So if we say in a simple words, for the development and improvement of the lifestyle of the woman and child, the government of India has been started implementing these programs, and under this program they have they have provided the facilities, and hence they started developing the situation and condition of women and the children. Now we'll see the next point. National Policy for the Empowerment of Women 2001 and the draft of the National Policy for Women 2016. The National Policy on Empowerment of Women adopted in 2001 states that all forms of violence against women, physical and mental, whether at domestic or socialist levels,
including those arising from customers, traditions, or accepted practices, shall be dealt with effectively with a view to eliminate its incidence. Here we are going to deal with the domestic violence, sexual harassment of women at workplace, and other related issues of women. Under this scheme or program, Indian government is providing protection for women from domestic violence. First of all, we'll see what does it mean by domestic violence. The definition is violent or aggressive behavior within the home, typically involving the violent abuse of a spouse or partner. Another simple meaning is all acts of physical, sexual, psychological, or economic violence that may be committed by a family member or intimate partner. Intimate partner means husband or wife. Now we'll see what is domestic behavior. Domestic violence is not physical violence alone. Domestic violence is any behavior the purpose of which is to gain power and control over a spouse, partner, girlfriend or boyfriend, or intimate family member. Abuse is a learned behavior. It is not caused by anger, mental problem, drugs or alcohol, or other common excuses. So here the government of India has provided the protection to women from domestic violence. See here I have given one picture: eradication of domestic violence, stop domestic violence. मतलब जो घरेलू झगड़े हैं और उस झगड़ों में पति पत्नी दोनों एक दूसरे के तरफ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, वो वायलेंस पे आ जाते हैं. कभी कभी तो उसमें मार झपट भी होती है. हमारे यहाँ हमने जो देखा है पैट्रियार्कल सिस्टम है कि जो हस्बैंड है और जो हेड पर्सन है पुरुष लोग तो वो क्या करते हैं, वो उनके स्पाउस को और उनके घर में जो जो लड़कियां हैं, जो वुमेन्स है, महिलाएं हैं, उन पे डोमिनेशन करते हैं. उनको खुद के कंट्रोल में लाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं. तो ये गलत तरीके भी वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनको शारीरिक और मानसिक उनको तनाव दिया जाता है, उनको अब्यूज़ किया जाता है. तो ये जो सब है वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है. एक्चुअली हमारे सिस्टम में, हमारे सोसाइटी में हमेशा महिलाओं ने ही सबसे ज़्यादा सहा है. जो लड़कियां हैं, महिला है, वही सबसे ज़्यादा सहती आई है. और जो मेल डोमिनेशन है और जो पुरुष लोग हैं, जो मेल है, वो क्या करते हैं, उन पे डोमिनेशन करते हैं, उन पे कंट्रोल लाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. सो ये जो सोसाइटी है उसमें बदलाव लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोग्राम्स, कुछ योजना जो है उसका अवलंब किया है. और वो योजना के अंतर्गत उन्होंने एक नया सिस्टम ये किया है. डोमेस्टिक वायलेंस नाम का एक प्रोविज़न किया है, अमेंडमेंट किया है. और उसके अंदर जो कुछ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घर के अंदर जो कुछ घरेलू झगड़े होते हैं, उसको कंट्रोल में लाने के लिए कायदा बनाया है, लॉ बनाया है. सो यहाँ पे स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस आपने देखा होगा, टीवी पे भी एडवर्टीज़मेंट में भी देखा होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर आपको दिखाई देता है, अगर आपको जानकारी है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो आप
नज़दीक के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आप बता सकते हैं, वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नंबर्स भी दिए हैं, उस नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हो। यह है डोमेस्टिक वायलेंस का एक एग्जाम्पल, हाउ द मेल डोमिनेशन ऑन फीमेल society or on girls also. This is one example of domestic violence. See, the husband and wife, what is their relation, then how they are behaving with each other. Next is domestic violence by the numbers. Here as per the survey, the government of India cast this numbers or cast this percentage of domestic violence in our country. Now here as per this new program, the government of India, they are addressing women that say no to domestic violence, because the government of India and the constitution has been provided a provision, has been provided helpline numbers for protect themselves, and one should not be silent, one should not be bear that violence, and for that purpose here say no to domestic violence. That this program has been started by our government. See, sexual harassment at workplace, that is also a new emerged issue for the women. Our second point is the sexual harassment of women at workplace. To prohibit that or to prevent that, the government of India made the act on 2013. 2013 में एक एक्ट बनाया गया जो शारीरिक शोषण होता है लड़कियों का, महिलाओं का, जहाँ पे वो काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये नया एक्ट जो है वो सरकार ने लाया है 2013 में. एंड थर्ड एक्ट वाज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज. ये जो एक्ट है वो 2019 में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है. दिस पिक्चर विल टेल यू how the women and girls, they are abusing by the male partners or by the males in various institutions and in companies. Women sexual discrimination, that is also a new issue in our country. There was a sexual discrimination in Indian Act because women lost their status when they married. So here again the gender issue, men and women issue has got arisen. See, we cannot eradicate the gender issue totally or absolutely from our society, but at least we can take efforts, at least we'll effort for the eradication of the sexual discrimination, and we need to come together, not only women and girls, but if we get the support from the society, if we get support from the male, so that time we can eradicate the discrimination, sexual discrimination from the roots. We'll see few more points about the sexual harassment of women at the workplace. Already we have seen the act has been signed or passed in 2013. An act to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto, whereas sexual harassment results
in violation of the fundamental rights of a woman to equality under Article 14 and 15 of the Constitution of India, and her right to life and to live with dignity under Article 21 of the Constitution, and right to practice any profession or to carry on any occupation, trade, or business, which includes a right to a safe environment free from sexual harassment. And whereas the protection against sexual harassment and the right to work with dignity are the universal recognized human rights by international conventions and instruments such as Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, which has been ratified on the 25th June 1993 by the Government of India. And whereas it is expedient to make provisions for giving effect to the said convention for protection of women against sexual harassment at workplace. So in this way we have completed the lesson number 3. If you have any doubt regarding it, please comment me in the comment box. Thank you very much.